Hello everyone, we are live and this time with an improved setup because I just realized that the screen on which I keep my chat is to my right and but on the screen that you guys can see the chat is appeared on my left, so every time I would talk to the chat it would appear as if I'm looking away from everyone and just talking to somebody at the edge of my room. So I moved the chat to where I would be, where I would appear to be looking. So that ऐसा लगे कि मैं chat से बात कर रहा हूँ. I can see that, right? I think that's clever. Uh, well, आज बहुत ज़्यादा exciting topics नहीं है. But yeah, you know what? This is the funny thing. When I started, मैंने बोला था कि I want to focus on like more on the things that people call economic issues. But मैंने लास्ट 2 दिन 3 दिन जो भी लाइक रिसर्च करने की कोशिश करी है आई रियलाइज हाउ लाइक आई वॉन्ट से बोरिंग पर मतलब दिमाग काफ़ी लगता है उसमें. नो बडी वॉन्ट्स टू explain the budget. Hi Vashak, first of all thank you for joining. Like a 5 year old please, like do you want this budget or the concept of budget, like budget क्या होता है या 2022 वाला जो बजट अभी आया है उसमें क्या है, बिकॉज दोनों अलग चीज़ें. आई गेस 5 year old को ये भी नहीं पता होगा कि बजट होता क्या है, राइट? ओके कूल. या इस साल का बजट, राइट? सो बेसिकली लाइक मेरा ओवरऑल इम्प्रेशन ये है कि बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं. लाइक इनिशियली तो मुझे लाइक बिकॉज कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा था, बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं जो अच्छी होनी चाहिए, राइट? एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें प्लान आउट करी हैं कि ओके हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे. दैट्स व्हाट बजट इज़. बजट में यू जस्ट से दैट ओके दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू इंक्रीज आर स्पेंडिंग ऑन, और इस चीज़ में हम और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड लाइक जो मेरी मेन एप्रीहेंशन है जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंटली नहीं बात कर पा रहा हूँ, इज़ बिकॉज किसी भी चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं है बहुत ज़्यादा. लाइक ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्ट्रीम के स्टार्टिंग में 2-3 टॉपिक्स को हाईलाइट किया था, जैसे ओके जॉब्स, मेडिकल हेल्थ लाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन, राइट? अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पब्लिक हेल्थ के लिए डिक्लेयर किया कि ओके विल हैव लाइक अ कॉमन सेंट्रल सॉर्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डेटाबेस की जहाँ पर सब लोगों की मेडिकल रिकॉर्ड्स सेंट्रली अवेलेबल रहेंगे, इजी रहेगा सबके लिए एक्सेस करना. और टेली काउंसलिंग सेंटर्स खोलेंगे फॉर लाइक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग. पर कैसे लाइक कोई मतलब किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा? लाइक उन्होंने बोला कि 23 निम्हांस सेंटर्स हैं उनको लाइक नोडल सेंटर बनाएंगे एंड उनके बेस लाइक उनसे लाइक ओके काउंसलर्स लाइक वहाँ बैठेंगे या काउंसलर्स उनसे एफिलिएटेड होंगे. लाइक एक्चुअल में रियलिटी में ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होगी, दैट्स नॉट समथिंग क्लियर. और वो चीज़ जब होगी तभी पता लगेगा कि कितनी इफ़ेक्टिव है. सेम फॉर एजुकेशन. कह रहे हैं कि ओके 200 चैनल चलाएंगे बच्चों के लिए, लाइक हर एक स्कूल की क्लास के लिए एक टीवी चैनल पे फ्री लेसन्स चलते रहेंगे. अगेन कैसे, मतलब क्या टीवी में स्कूल्स में टीवी नहीं होते हैं सब, और या तुम ये सोच रहे हो कि नहीं घर पे करेंगे, या हाउ वुड यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस, राइट? अभी के लिए जस्ट अनाउंसमेंट. इवन द थिंग्स लाइक अभी आया कि ठीक है विल टैक्स जो भी प्रॉफिट हो रहा है ऑन द सेल ऑफ डिजिटल एसेट्स बाय एट द रेट ऑफ 30%. लेकिन आई वॉच्ड लाइक
press conference by by Nirmala Sitharaman, the finance minister who has presented the budget. तो उनसे पूछा कि ठीक है, डिजिटल एसेट से आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू लाइक, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है डिजिटल एसेट की, कि ठीक है एनएफटी डिजिटल एसेट में आ गया, बिटकॉइन आ गया, लाइक लेकिन और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आ रही डिजिटल एसेट में। देर लाइक नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है, अभी आप वेट करो, लेट अभी हम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस कर रहे हैं, अभी 100% क्लियर नहीं है। सो उसका भी कुछ लाइक इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं है, अभी बस बोला है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाली बोली हैं कि ठीक है अच्छी होनी चाहिए। और बाय द वे, एन एफ टीज एक्सेप्ट करना और क्रिप्टो एक्सेप्ट करना, एंड नॉट इन जस्ट दैट, दे आर सेइंग कि ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डिजिटल रुपी निकालेगा which will work on the same principle or like the same technology as cryptocurrency. It will be just a crypto version of the Indian rupee, which is the worst idea in my opinion. ठीक है, ये मतलब पहली बात, क्रिप्टो का इंटायर जो पॉइंट है, जो इंटायर प्रिंसिपल है, वो ये है कि it should not be like governed by some sort of ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ये लाइक फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली उसको कोई फॉलो तो कर नहीं रहा है, लेकिन लाइक प्रिंसिपल ऑन प्रिंसिपल भी बहुत ही अजीब चीज़ है कि नहीं आरबीआई इशू करेगा क्रिप्टो कॉइन्स। एंड दूसरी बात, क्रिप्टो कॉइन्स इन दमसेल्व्स लाइक सरकार कर रही है, तो उनके सारे जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं इकॉनमी पे और एनवायरनमेंट पे, ऐसा नहीं है कि वो चले जाएंगे। ठीक है, वो भी रहेंगे। सो लाइक इफ़ यू आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, अगर तुम ब्लॉकचेन ही यूज़ कर रहे हो तो क्या फ़ायदा है, यू नो, इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ थिंग। कुछ कुछ चीज़ें जिनके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ, स्पेशली लाइक जो मेन क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं, होल्ड ऑन, आई जस्ट रिकॉर्ड दिस। सो जो मेन क्रिटिसिजम्स आ रहे हैं इसके बजट के, एंड लाइक जो चीज़ के लाइक मुझे भी काफ़ी उस चीज़ के बारे में बॉदर्ड हूँ मैं, क्योंकि लाइक अगेन हार्कनिंग बैक टू, wait, is harkening even the right word to use here? Like calling back to my first stream overall, I talked about how unemployment has hit India pretty hard. Uh, if I remember, their entire issue is illegal things may you can track crypto. हाँ, नहीं नहीं नहीं, सो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो है, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन, डोजकॉइन, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दोज एज लीगल टेंडर। व्हाट दे आर सेइंग इज आरबीआई अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन निकालेगा। ठीक है, सो एनीवे वो तो चांस है ही नहीं कि इलीगल चीज़ के लिए यूज़ करना, बिकॉज हाँ एज यू पॉइंटेड आउट, बट क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट अ करेंसी, एंड दिस इज समथिंग दैट अगेन एटलीस्ट निर्मला सीतारमन ने इतना क्लियर किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्रिप्टो करेंसी और करेंसी बोलना है सबसे पहली गलत बात है। क्रिप्टो करेंसी करेंसी है ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट है। वो ऐसी चीज़ है जो तुम इसलिए लेते हो ताकि किसी और को और महंगे में फ्यूचर में बेच पाओ। दैट्स नॉट हाउ करेंसी वर्क्स। करेंसी की वैल्यू टाइम के साथ कम होती है, एंड अगर 1-2% साल की कम होती है तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज व्हेन द करेंसी की वैल्यू डिक्रीजेस देन तुम्हारे को इंसेंटिव मिलता है कि ठीक है मुझे पैसे खर्च करने चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारे पास आज कार ख़रीदने के पैसे हैं तो तुम ये सोचोगे, और तुम्हें कार चाहिए तो तुम कहोगे ठीक है लेट मी बाय अ कार। ठीक है, नहीं तो फ्यूचर में और महंगी भी हो सकती है। कार्स के साथ ऐसा ही होता है, कार्स के नए मॉडल्स जितने आते जाते हैं फ्यूचर में और महंगे होते जाते हैं, राइट। सो एंड तुम्हें पता है रुपए की वैल्यू भी कम होने वाली है, तो तुम कहते हो ठीक है जैसे पैसे आ गए लेट मी बाय इट। बट क्रिप्टो जैसी चीज़ जिसमें तुम्हारा मतलब उम्मीद ही ये है कि इसकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगी। ठीक है, उसमें होता है कि नहीं मैं अभी क्यों ख़रीदूँ, अभी का 10 लाख रुपया फ्यूचर में 20 लाख 50 लाख भी हो सकता है, तो मैं अभी क्यों ख़रीदूँ, अभी क्यों खर्च करूँ
इसको, इस एसेट को, राइट? तो तुम उस पैसे को खर्च नहीं करोगे। एंड अगर इस चीज़ को करेंसी की तरह यूज़ करने लग गए तो वो होगा, डिफ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन का अपोजिट जो होता है। ठीक है, जब कोई पैसे खर्च नहीं करेगा क्योंकि सबको लगेगा कि नहीं फ्यूचर में पैसे की वैल्यू बढ़ सकती है, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, दिस शुड नॉट हैपन इन एन इकॉनमी। तो इट्स ऑल अराउंड क्रिप्टो इज़ अ बैड आइडिया। पूरा 2.5 घंटे का वीडियो ऐसे है मेरे पास, ठीक है। लाइक मैंने नहीं बनाया बट आई वॉच्ड इट, लाइक दिस इज पर्सन कॉल्ड डैन ऑल्सन, ही उसका चैनल है फोल्डिंग आइडियाज़ करके। उसने बहुत ढंग से, एंड इट्स नॉट इवन दैट बोरिंग, इट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। उसने काफ़ी वो प्रॉपर बनाता है वीडियोस, लाइक जैसे जैसे वी सॉस बनाता है ना, प्रॉपर सेट के साथ, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर विजुअल्स, ग्राफिक्स एंड प्रॉपर नरेशन के साथ, वो उस टाइप का उसने प्रॉपर वीडियो ऐसे बनाया। सो आई वुड रियली रिकमेंड यू वॉच दैट टू गेट अ होल लाइक पिक्चर ऑन कितना गंदा आइडिया है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सो basically yeah, it's not that great. But yeah, jobs, right? We were talking about jobs. So I try to do some research. Oh, before that I am at like 46 subscribers on YouTube. So if you're watching this right now, I just need like 4 more for 50, and 50 is a nice round figure. Okay, I would like to have 50 subscribers. Do you think anybody who's watching, do you think I should put it on my screen? You know, 4 subscribers needed. Uh, it's okay. Uh, what was I saying? Yeah, should I just put a banner? Hi Arish. Should I just put a banner here just says 4 subscribers needed for 50? Something like that. You know, I don't know. I think that would be tacky. I don't think that would be. I think that would not be a classy idea. Yeah, it's just 50, right? It's not too much to ask for. You know what? Hold on. uh, yeah, I'll just put like a proper, Bikari type ka line, which will be like 4 more subs needed on YouTube. Hold on. Let me change the font to something. Yeah, I don't know. I'll just. Where is Comic Sans? Yep. Hold on. Hold on. Where should I put it? this is this will look terrible when I cut segments out of this. This will look horrible. Should I put should I put it in color? Yeah, white is fine. Uh, yes, Comic Sans supremacy. Yes, because people will notice this. It's such a well recognized font ना, सब लोग पहचान जाते हैं, देखते हैं ओ Comic Sans, this guy must be serious. On my face. नहीं, दिस विल लाइक अगर मैं यहाँ रखता हूँ ना, दिस आई कैन, दिस इज एब्सोल्यूट डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज अगर मैं नीचे रखता हूँ आई कैन
crop it out. जब like if I want to make a clips out of this, I can crop it out in the future. But if I put it here, this it's gone. Footage is unusable. It's so I'll not do that. I'll just put it here. Uh, okay, yeah. Talking about jobs, right? Jobs. India needs jobs. COVID 19 has messed up the jobs like availability in India. Like because you can even see it like in graphs and stuff. You can see like the unemployment rate is going down year after year, right? Like 5 4 3 it's coming down, and 2020 it's like whoop 8.4%. Okay, it's been a terrible reality. एंड लाइक आज हम उसके बारे में थोड़ा लाइक बात करते हैं बिकॉज दिस बजट एंड द थिंग्स दैट पीपल आर सेइंग अबाउट इट हैव ऑल्सो रिवील्ड टू मी लाइक ओके जॉब जा कहाँ रहे हैं, क्या हो रहा है जॉब्स के साथ, राइट? लाइक बियॉन्ड द इंटुइटिव लेवल एंड लाइक ओवरऑल इकोनॉमी पे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? सो yeah, talking about like also when I was like researching these jobs like sorry researching about जॉब्स का लाइक क्या फंडा चल रहा है रिगार्डिंग लाइक इन द बजट दैट लाइक 2022 आई वेंट डाउन दिस वियर्ड रैबिट होल वेयर लाइक ओके लाइक आई थिंक यू नो व्हाट मैं स्टार्टिंग से लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है? सो सबसे पहले बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म इवन इंक्लूडिंग बहुत लोगों का क्रिटिसिज्म इंक्लूडिंग पीपल लाइक यू नो राहुल गांधी ऑन ट्विटर, दे लाइक ओके इस बजट में एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं किया, एम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं दिया, इवन दो एम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया है, इवन दो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया राइट नाउ। तो रिस्पॉन्स क्या आता है कि नहीं आप देखो ना हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया है, ठीक है? अब कैपिटल मेरा कैमरा जैसा क्यों कर रहा है मेरे साथ, वाई इज़ इट डूइंग मी लाइक दिस? होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई टू फिक्स दैट। प्लीज़ डोंट फ्रीज। एनीवे, सो या एज आई वाज टॉकिंग अबाउट हाँ, तो रिस्पॉन्स क्या आता है क्रिटिसिज्म के कि नहीं आपने पढ़ा नहीं हमारा बिल, हम लाइक जैसा लिटरली लाइक निर्मला सीतारमन लिटरली वाज लाइक यार यू नो शेम ऑन यू राहुल गांधी, तुमको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है क्या? यू नो यू आर द लीडर ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, आई पिटी यू, and like a lot of politically charged language. We can go over these like because that press conference was like very interesting. It was filled with a lot of memes and basically they were like हाँ हमने लिखा तो है we'll increase the capital expenditure सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? क्या मतलब है इस चीज़ का? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली सरकार जिन चीज़ों पे डायरेक्टली पैसे खर्च करती है, राइट? सो जैसे हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स, मेट्रो, ब्रिज, लाइक मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा, या मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्म्स एंड व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें, राइट? So these are things that the government, these are things that government directly spends money on, like the central government, and then central government also, like especially in this budget, they have said that they will also give out loans to state governments, तो जो ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रोग्राम फंडेड प्रोग्राम्स हैं या सर्विसेज हैं उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे एलोकेट किए हैं कि उनको भी हम तुमको लाइक इट्स लाइक अ लोन, इट्स लाइक ग्रांट, नॉट इवन अ लोन दैट इज़ बिन गिवन। इट्स नॉट लाइक तुम इकोनॉमी से पूछोगे, सम पीपल लाइक नहीं ये तो एक्चुअल में इट्स नॉट, इट डज नॉट कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तुमसे बोल रहे हो एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉट काउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट एनीवे नाम की चीज़ है, लाइक किसको फ़र्क पड़ता है, वो केयर्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड। एनीवे सो दे लाइक नहीं हमने अपनी
स्पेंडिंग पब्लिक चीज़ों में इंक्रीज़ करिए, राइट? सो हाउ डज दैट हेल्प? For example, so this is like a sort of like a Keynesian principle. So there was a guy called Keynes जिसने काफ़ी सारी theories लिखी थी, like economics के बारे में, macro economics के बारे में, and like the relationship between public investment and private investment. Public investment means government जो पैसे इन्वेस्ट करती है चीज़ों में, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग, एंड ये चीज़ काफ़ी लाइक सॉर्ट ऑफ वेल नोन फैक्ट भी है कि अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक सर्विसेज में गवर्नमेंट डायरेक्टली ज़्यादा पैसे खर्च करती है, दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. सो बेसिकली ठीक है, ज़्यादा रोड्स होंगे, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, ज़्यादा पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होंगी, स्टफ लाइक दैट, ठीक है? सो उसकी वजह से ज़्यादा नौकरियां करने की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों के पास, एंड उतना ज़्यादा लोगों के लिए काम करना आसान रहेगा, और उतना ज़्यादा लाइक कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान रहेगा. लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए लाइक ज़्यादा विलिंग होंगे. लाइक दिस इज अगेन, मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? मैं बहुत मोटा मोटी बता रहा हूँ, बहुत रफ बता रहा हूँ, ठीक है? बट एनी वे, दैट्स द थिंग, दैट्स देयर होल प्रिंसिपल की, ठीक है, हम इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लाइक, एंड एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है? इस चीज़ को समझने के लिए लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ जो है थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, फाइन प्रिंट पढ़ने की जरूरत है, विच आई रेड अ लिटिल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, बट इट्स एक्चुअली क्वाइट रिवीलिंग कि कितना ज़्यादा दिस इज़ लाइक, अ लॉट ऑफ दिस इज़ लाइक messaging without any focus on delivery. Because for a lot of these services that I'm talking about, for example, roads and highways, right? So roads and highways India में किसके like main responsibility है? NHAI, National Highway Authority of India, ठीक है? और देव डन इज़ देयर से कि ठीक है, हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस साल काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है? विल स्पेंड मोर ऑन देम. But at the same time, earlier what used to happen is that there used to be like a hybrid model for funding NHAI, जहाँ पर partially गवर्नमेंट फंड्स के थ्रू उनको पैसे मिलते थे, एंड पार्शियली वो अपने खुद पैसे अरेंज करते थे, बोरो करके मार्केट से, इन्वेस्टर्स ढूंढ के, इन्वेस्टर्स से डील करके, एंड सो ऑन. सो इट यूज टू बी लाइक कि समथिंग लाइक, अगर अगर टोटल एक्सपेंडिचर 1,34,000 करोड़ है, तो उसमें से 65,000 करोड़ करीब उनका जो अपने खुद से अरेंज कर रहे हैं, अपना खुद से कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, वो कंट्रीब्यूशन होता था, एंड द रेस्ट यूज टू बी इंटायरली, the rest used to be government loans and equity. Now they're like, okay, now you do not do any money or like any fundraising through the market. तो अभी सारा का सारा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, ठीक है? और दैट मीन्स इज कि ठीक है, तुमने एक तरफ सरकार ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई है, ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर डिनाइंग these organizations like NHAI, these institutes, they are denying their ability to raise money from the market, right? And market किस चीज़ से बनी है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, राइट? नॉट कॉन्ट्रैक्ट, या बेसिकली, राइट? सो नाउ इट्स लाइक नहीं, उनका you can't utilize them. So even though सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है एक्सपेंडिचर का ऑन NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट शेयर बाय परसेंट हैज़ इंक्रीज, बट द इफेक्टिव स्पेंडिंग हैज़ लाइक नॉट इंक्रीज दैट मच, ठीक है? एंड सिमिलरली BSNL का भी सेम सिनेरियो, दे ऑल्सो लाइक कि ठीक है, हम तुम्हें दुगना बजट दे रहे हैं इस साल, बट इट्स देयर, you know, all of it is us, ठीक है? सो हमारा बेसिकली
लेबल हमारा नेम प्लेट रहेगा, बट at the end of the day it's not that great of an increase in the actual capital expenditure. एक तरफ तो ये बात है, और दूसरी तरफ जो मेन चीज़ है जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ये है, और जो कि तुमने लाइक आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना भी नहीं होगा, दैट इंडिया में जो लॉकडाउन से भी पहले से इकॉनमी में जो स्लो डाउन आ रहा है, उनका जो लाइक ग्रोथ ठीक ठीक से नहीं हो रही थी, राइट, उसका रीज़न ये नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन कम है, एटलीस्ट राइट नाउ। इशू ये है कि हमारा एग्रीगेट डोमेस्टिक डिमांड कम है। इन सिंपल अंडरस्टैंडेबल टर्म्स, जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, उसको इंडियंस कितना कंज्यूम कर रहे हैं, दैट रेशियो इज़ ऑफ बैलेंस। द रेशियो has been, even before 2020, it has been that there is less demand domestically. तो domestically जो goods produce हो रहे हैं, उनकी domestic demand is really like is not matching up to what the production, the availability of the supply is, ठीक है। एंड तब से लेके तो अभी तक गवर्नमेंट ने जो भी सॉल्यूशंस दिए इन चीज़ों के ऊपर, ऑल ऑफ दैट हैज़ बिन टू सपोर्ट द सप्लाई, ठीक है, टू सपोर्ट द कि नहीं ओके फैक्ट्रीज़ के लिए लाइक जो छोटे लाइक देयर इज दिस टर्म कॉल्ड MSMEs, लाइक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दीज आर मीडियम साइज फर्म्स बेसिकली, और इंडिया में ज़्यादातर मीडियम साइज फर्म्स ही हैं। मीडियम साइज मीनिंग उनका जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट है। मीडियम साइज मीन्स उनका जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट में लाइक इन्वेस्टमेंट है, दैट्स लाइक दैट इंटायर थिंग इज़ लाइक 25 लाख और बिलो, राइट, दैट इज़ लाइक एन MSME, एंड बहुत सारे बिजनेसेस इस चीज़ में इसके अंडर आते हैं। सो उनको लिए लोन्स, उनके लिए लोन्स करना इजी रखना, उनके लिए जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए लाइक अब सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन देना उनके एम्प्लॉयज़ के लिए हैं, फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लाइक इफ़ यू आर एम्प्लॉयड बाय द वे, यू शुड लर्न अबाउट व्हाट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज। सो all these things are focused towards fixing like things like intervention from a supply side, कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे दे आर लाइक कि उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। बट the thing is they're not focusing on what they're not sort of like trying to solve is the demand, ठीक है। डिमांड कम है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी किसी फैक्ट्री के लिए लोन लेना आसान कर रहे हो, वो लोन क्यों लेगी अगर उनकी जो डिमांड है वो कम हो रही है, ठीक है। लोन अगर कोई बिज़नेस लेता है तो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए लेता है, और लोन तभी दिया जाता है। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है आज मेरा बिज़नेस है, मुझे लोन दो, इसको तो जो लोन दे रहा है, जो बैंक लोन दे रहा है, वो भी ये बोलेगा कि ठीक है अगर तुमको इसको रीपे करना है हमें, तो मतलब तुम्हारा बिज़नेस बढ़ना चाहिए ना। अगर तुम्हारे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, अगर तुम्हारे एसेट्स बढ़ेंगे, तभी तो तुम इस लोन को हमें वापस कर पाओगे। बट देन मैं क्यों लोन लूँगा अगर मुझे पता है कि मेरे बिज़नेस की बढ़ोतरी नहीं हो रही, राइट। सो लाइक मेरे पास डिमांड कम हो रही है, देन जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ मेरे पास सरप्लस जा रहा है, मेरी चीज़ें बिक नहीं रही है बेसिकली, राइट। सात चीज़ों जितने पे भी मैं बेच रहा हूँ उसका दाम कम से कम होता जा रहा है, देन मैं क्यों लोन लूँगा बिज़नेस को बढ़ाने के लिए? मेरा बिज़नेस ऑलरेडी घाटे के कगार पर है, राइट। सो दैट्स द थिंग, लाइक दैट इस बजट में भी nothing has been like, again this increase in capital in expenditure, once again a supply side problem. And uh, what lockdown has done to make it worse is that now you have
so many factories, so many like industries जो especially these the unorganized, like किसी का अपना छोटा सा बिजनेस है, किसी के किसी के टेलर की दुकान है छोटी से लेके, या किसी का एक छोटा स्पोर्ट्स आइटम बनाने की छोटे से फैक्ट्री है, या छोटे छोटे कार पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। एवरीथिंग गॉट डिक्लेयर्ड एज नॉन एसेंशियल, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू शट इट डाउन, राइट। अब वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, उनकी उनकी आमदनी गई, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन दीज मीडियम एंड स्मॉल साइज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, ये अनस्किल्ड या लो स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, ठीक है। अब उनके पास कोई इनकम नहीं है, तो वो उन सिटीज़ में, उन शहरों में, टाउन्स में क्यों रहेंगे जहाँ पर उनको काम मिल रहा था? अब उनके पास काम नहीं है, व्हाट विल दे डू? they'll गो बैक टू देयर होम्स इन विलेजेस, अपने गांव वापस जाएंगे। जो कि हमने 2020 में देखा भी था, कितने सारे लोग, इट वॉज लाइक अ बिग थिंग ऑन न्यूज़ कि नहीं ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अरे यार, उनके पास घर नहीं है, ठीक है, दे कांट, उनका यहाँ पर पक्का घर नहीं था जहाँ पर वो मजदूरी कर रहे थे, ठीक है। अब जब कंस्ट्रक्शन बंद हो गया है, इतने सारे कारखाने बंद हो गए हैं, गैराजेस बंद हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, दे हैव टू गो बैक टू जहाँ पर उनको लाइक अलाउड है रहना, जहाँ उनको रेंट नहीं देना पड़ेगा, जहाँ पर उनको हटाया नहीं जाएगा, जहाँ पर उनकी ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड नाउ इवन आफ्टर गोइंग बैक होम, तो ऐसा थोड़ी है कि दे कैन जस्ट सेट अराउंड, खाना तो तब भी है ना। सो व्हाट विल दे व्हाट विल दे टर्न टू? दे विल टर्न टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स लाइक मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मतलब जो आई एम प्रीटी श्योर, लाइक इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट्स, बहुत ही रफ टर्म्स में, इट्स जस्ट समथिंग दैट एवरी रूरल हाउस होल्ड इज विल बी गारंटीड 100 days of employment per year, every financial year, ठीक है। सो अगेन नाउ, लो सबके सब, लाइक इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, लेट मी जस्ट पुल अप दोज आर्टिकल्स, बिकॉज मैं अभी तक भी लाइक सॉर्ट ऑफ हवा में बात कर रहा हूँ। होल्ड ऑन, आई नीड टू, या सो दिस आर्टिकल इज़ प्रीटी ग्रेट एक्चुअली, लाइक आई थिंक मैं तो बहुत ही लाइक समराइज्ड वे में बोल रहा हूँ, बट आई वुड रिकमेंड रीडिंग दिस इज़ an article titled Budget 2022, there's good and bad news on the jobs front, on this website The Wire. So basically, yeah, मुझे क्या दिखाना था, this, sorry, like at 32 million semi-skilled and unskilled migrant laborers went back to agriculture between 2019 and 20, right? And by the way, like this is the reason why, like for the first time since 2003, 2004, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है, विच इज़ अपेरेंटली अ बैड थिंग। आई डेंट नो, इट वॉज लाइक, मैंने सोचा नहीं था कि इट वुड बी अ बैड थिंग, बट लाइक आई रेड दैट रघुराम राजन, हु इज लाइक was is the ex chairman of RBI, ही वॉज लाइक कि नहीं, देर किसी भी डेवलपिंग देश में एग्रीकल्चर जॉब साल दर साल बढ़ते नहीं हैं, वो धीरे धीरे कम होते हैं, as people migrate to manufacturing and service industry jobs, which are like better paying, or which are like better for the economy, I guess. But yeah, that's it, like that is a thing. And वहाँ पर आके सब लोग, all these, so they are depending on this MG मनरेगा प्रोग्राम, राइट, ठीक है। अब मनरेगा के लिए पहली बात तो 2019 से ही फंडिंग लाइक कम थी, देन 2020 में दे इंक्रीज्ड इट क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। एंड देन आई थॉट कि ओके,
इस साल क्या कर रहे हैं, इस साल लाइक व्हाट आर दे डूइंग फॉर मनरेगा, बिकॉज आई थिंक इसकी ज़रूरत है काफ़ी, लाइक आई थिंक अभी भी सारे जॉब्स वापस नहीं आए हैं। टर्न्स आउट उन्होंने एग्जैक्टली उतने ही पैसे एलोकेट किए हैं जितने 2018 में किए थे फॉर मनरेगा, एंड दैट इज़ लाइक 25% लेस देन व्हाट दे शुड हैव। लाइक इफ यू सी हियर, इज 25% lower than the estimated amount that like they should allocate to it, right? एंड लाइक अगेन यही लाइक मेन चीज़ है कि पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, मोस्ट लाइकली इस बार भी वो यही करेंगे कि दे विल जस्ट एंड अप इंक्रीजिंग इट एज एज डिमांड इंक्रीजेस। बट इवन देन इट्स लाइक वो प्रॉब्लम के पीछे भाग रहे हैं, they are not really addressing that thing. This could be like a solution for like a big solution for good majority of the unemployment problems, because unemployment साल दर साल increase ही हो रहा है। There's like all these numbers that they have told about that हर साल 5 million, which is like 50 lakh people enter the labor force, and like already in 2019 3 करोड़ लोग ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड थे, राइट? एंड देन उससे 10 लाइक 1 करोड़ लोग उससे बढ़े ही हैं तब से लेके अब तक, कोविड 19 स्टार्ट होने से लेके अब तक, राइट? सो एक तो उन्होंने वहाँ पे लाइक छो मतलब कट मार दिया, ठीक है। ऊपर से the second thing which I read about, hold on. Yeah, sorry. So as I was talking about, जो आई थिंक मैंने दोनों पॉइंट कवर कर लिए हैं। ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस द डिमांड डेफिसिट, राइट? एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन जो हो रहा है, and the job guarantee programs, right? So there are a lot of things that they can do for like the aggregate demand problem, because like to continue the example of what I was talking about कि एक पूरी फैक्ट्री लाइक मान लो कपड़ों की थी, ठीक है, देन कपड़े आर लाइक नॉन एसेंशियल बिजनेस नाउ, इट्स शट डाउन। वहाँ पर जितने लोग थे सब वापस चले गए, दे आर डिपेंडेंट ऑन मनरेगा नाउ। अब उस शहर में क्या चल रहा है, थिंक अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज नाउ सडनली देर आर सो मैनी अनएम्प्लॉयड पीपल या पीपल हु आर गेटिंग लोअर एंड लोअर पेइंग जॉब्स, ठीक है। आई एम एम्प्लॉयड ऑल्सो, मुझे ही पता है कि 2021 में हमें लाइक हमारी जो इंक्रीमेंट्स होते हैं ईयरली, दे वर ऑल्सो प्रेटी अंडरवेलमिंग, एंड इन्फ्लेशन चल रहा है अपने हिसाब से, बट लाइक लॉट ऑफ दिस वॉज द रियलिटी ऑफ लॉट ऑफ इट्स नॉट लाइक कुछ कंपनीज की प्रॉब्लम है, अक्रॉस द बोर्ड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द इंक्रीमेंट्स वर रियली बैड, the increment that you would expect. Like it has nothing to do with performance. Performance has not gone down. The productivity, especially for like industries like IT industry, right? The productivity has not gone down in IT industry, and yet the our increments were not in proportion with the inflation that has happened. तो अब अगर लोगों के पास पैसे कम हैं और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, राइट, तो नेचुरली लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। लोग स्पेंड, देयर आर बिहेवियरल थिंग्स ऑल्सो, लोग बाहर जा नहीं रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। काफ़ी सालों लाइक अभी तो जो जिसका मन जो कर रहा है वो कर रहा है, बट इन 2020 फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स इन 2020 nobody was going out like shopping in malls, right? Nobody was going out eating at restaurants, ठीक है। Nobody was going out like on trips, ठीक है, for vacation and stuff. तो obviously there is
द डिमांड जो कि ऑलरेडी कम चल रही थी, प्लमेटेड, राइट? नाउ वंस डिमांड प्लमेट्स, ठीक है, जब चीज़ों की डिमांड कम होती जाती है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के, उनको और लोगों को ले ऑफ करना पड़ता है, ठीक है? एंड this becomes a cycle, right? It becomes a cycle where it's like, बिकॉज हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग हैं जो प्रोडक्टिव काम करते हैं, और हम ही लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है? सो अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हम चीज़ें नहीं खरीद रहे, हमारे जैसे ही और लोगों के की नौकरी जा रही है, अब उनके पास भी पैसे कम हैं, वो भी और चीज़ें नहीं खरीद रहे, चीज़ों की वैल्यू, और मतलब जिसे कहते हैं कि चाहे वैल्यू चेंज ना हो रही हो, लेकिन हमारी एबिलिटी उन चीज़ों को ख़रीदने की कम होती जा रही है, ठीक है? जो कि सप्लाई लाइन पे अफेक्ट करती है। अब सप्लाई के पास इतनी डिमांड उसको पुल नहीं कर रही सप्लाई चेन को आगे, राइट? सो दिस कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, और होता ही जाता है। अब चाहे तुम लोन्स देते रहो इन स्मॉल बिजनेसेस को, अवेलेबल कराते रहो इस तरीके से, but they will not utilize these facilities when they themselves are not seeing any point in continuing their business, right? So that is something that is ये चीज़, and this is not rocket science. I can understand this even though I have zero understanding of economics, and I'm pretty sure I have not, मैंने पूरा पूरा ढंग से एग्ज़ाम देने लायक नहीं समझा है, बट मैंने एटलीस्ट इतना समझा है कि हो क्या रहा है, राइट? And we can even look at some of the, there in not even this, not even this, not even this. Yeah, I was looking at one of India की one of the biggest rising service industries, मेरे opinion में, was the ride sharing apps, and especially in Bangalore there is this service called Quick Ride, जिसमें it was not cabs, but it was कार पूलिंग, कि तुम अपने आप को, अगर तुम्हारे पास कार है, तुम डेली कम्यूट करते हो, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन अदर पीपल कैन रजिस्टर दैम सेल्स एज पैसेंजर्स, एंड वो देख सकते हैं कि ठीक है, हमारे रूट पे अगर कोई जा रहा है, अपनी गाड़ी खाली लेके जा रहा है, हमें बैठा सकता है, इज़ विलिंग टू पूल द राइड विद अस, देन हम उनके साथ जा सकते हैं, एंड दिस वॉज मच चीपर देन कैब। एंड आई वॉज सीइंग कि उनका बिजनेस कैसे अफेक्ट हो, डिड दे हैव टू ले ऑफ एनी वन, बट आई थिंक उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉई बेस काफ़ी कम था, बिकॉज उनको सिर्फ एक अपने ऐप के सर्वर्स मेंटेन करने थे और अपने सपोर्ट कॉल सेंटर टाइप मेंटेन करने थे, तो उनका इतना ज़्यादा मैसिव ले ऑफ के साइकिल नहीं हुआ, बट या उनका बिजनेस 10% हो गया जो उनका पहले था, एंड विच आई एम इवन सरप्राइज कि 10% भी बचा है उनका बिजनेस अभी। आई डोंट थिंक एनी बडी इज कार पूलिंग, बिकॉज कैब्स में क्या होता है कि ठीक है, तुम ओला है, जैसे ओला में अभी तुम शेयर्ड कैब्स बुक नहीं कर सकते, जो भी कैब है तुमको पूरी अपने लिए बुक करनी है, और एक कैब में तुम दो लोगों के से ज़्यादा लोगों के लिए बुक नहीं कर सकते, तो उसमें ऑलरेडी तुम्हारे पास फ्रीडम है कि ठीक है, हम दो ही लोग बैठ के जा रहे हैं, राइट? एंड जो भी हमारे साथ जा रहा है वुड बी somebody we know, but इन कार पूलिंग आई गेस पीपल आर मोर एप्रीहेंसिव अबाउट स्ट्रेंजर्स के साथ बैठने के में, और ज़्यादा लोग एक गाड़ी में बैठने में, आई गेस पीपल डोंट प्रेफर दैट मच, बट एनी वे for fixing the demands, there's this research paper that I found कि डिमांड साइड से फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम को क्या किया जा सकता है, राइट? सो given the final, and this is all just describing the problem.
Oh, they have not. They have not put any solutions for this. Let's Google. You know what? Let's Google like if we can find some solutions for the possible solutions for decline in aggregate demand in Indian economy. Let's see what this is. This is the education stream. We're all learning together, and I'm pretty sure everybody has stopped watching by now. My camera keeps dying. क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? Today I have a boring topic, and even then I'm energetic. And आज मेरा कैमरा मेरा साथ नहीं दे रहा है. Let me try to close some apps. Uh, Post-pandemic economic recovery, 7 priorities for India. Can we go to the conclusion? I've seen these graphs. Okay, hold on. Not a bookmark. Wait, there's no conclusion. Is there a discussion? Okay, a blueprint for economic revival. Under the popular perception, India did reasonably well in high-scale manufacturing exports while it underperformed in low-scale. The country is still in position to gain future export opportunities, particularly in low-scale. Okay. Okay, yeah, so these are some of the solutions that these people are proposing. A universalized PDS for a year. So what exactly is PDS? Expenditure on food percentage. The first fiscal intervention should be in making food available to as many as possible. That can free substantial amounts of purchasing power for other kinds of consumption. Yeah, this makes sense. Like we already have like ration programs. We can sort of expand that and make food more available, right, to households, uh, which will free up the money that we spend on food on other things that we can spend money on, right? And it's all very interesting stats, which I'm sure mean a lot. I'm sort of glazing past them. Uh, Yep, expenditure on food is one of the principal expenses of any household. Covering that with universalization of PDS can free money for other purchases. Let me just figure out what PDS is. Public distribution system. Okay, that sounds like socialism. Uh, but yeah, this makes a lot of sense. I should have prepared these points beforehand. It looks so lame that I'm learning them as I'm presenting them. But anyway, yeah, this is another major thing. We were talking about Narega, right? Why is there not a Narega equivalent in cities? जैसे नरेगा रूरल फैमिलीज के लिए है. Why is there no equivalent of Narega like a 100 day guaranteed employment every year for people, for families living in cities? You know,
So that is uh, something that could be better. Direct cash transfer, something similar to, I guess, the stimulus bills that the US while were getting. Uh, Provide input tax relief, as they have done this, as they have done some of this in the, they have done this as well. This is also one of the things that they have done. Public investment in physical and social infrastructure. But okay, physical and social. What is social infrastructure? There has been expectations to attract manufacturing companies which are leaving China towards India. Growing infrastructure environment, yeah, of course. And this is all like last 2 points at least are just pure economics. I don't even want to go over them. I don't think anybody is watching anymore. This is so boring. This like, but I think, you know what? Hold on. I think my mom is. Okay, yeah. So yeah, I mean like the entire point of me going over this document is that like काफी demand focused solutions हैं which like the finance ministry has missed out on in this budget, and hopefully बाकी चीज़ें which they have done, because I think they have done this, they've so yeah, they've definitely done this. They've increased public investment. So yeah, let's see how everything pans out, and let's hope for the best. I'll be honest, I'm not too optimistic. uh, I'm pretty sure when I have not explained anything like a 5-year old, but you know what, I think I've explained it pretty well. Don't even worry about it. I'll cut together a segment later and upload it. So anyway, अभी के लिए that was my take on uh, that was my take on um, the 2022 budget. Could have done a lot better, in short, and could have been like more clear, ताकि सबको ये ना कहने को कि हाँ बोला बहुत है, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कुछ पता नहीं है, you know. Yeah, so अभी विल टेक 5 मिनट का इंटरवल, and then we'll come back and talk about what are you going to talk about. Oh yeah, the Karnataka thing.
Hello. Wait, is my mic? Yep. We are back. And sorry. And Vishak, if you're still watching, you should have told me that I'm streaming in the Doom category right now. On Twitch on the Doom 2016 category, and it is a little funny that I'm talking about talking about Indian Union budget for 2022 and 2023 uh, under the Doom tag. It is a little funny, but at the same time, this is, I guess, the reason why I don't get any viewers on Twitch because मैं हमेशा अपनी स्ट्रीम किसी गलत कैटेगरी के साथ स्टार्ट करता हूँ एंड हाफ वे थ्रू आई फिक्स इट बट अब क्या फ़ायदा यू नो हेलो I'm pretty tired. It's okay, and I'm also excited about our next story. So we'll power through together. Okay, so hold on. Yeah, so अपनी next topic to discuss is कर्नाटका में चल क्या रहा है यू नो बिकॉज मैं कर्नाटका में रह रहा हूँ बट सारी न्यूज़ मुझे नॉर्थ इंडियन सोर्सेज से मिल रही है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में दिस यू नो विच इज़ अ वियर्ड थिंग सो एंड ऑल्सो all the news regarding this particular issue जो रेज हो रहा है अभी ऑल ऑफ द न्यूज़ इज़ इन लाइक टुकड़ों टुकड़ों में ठीक है एंड आई नीड लाइक अ complete article. So let's see if we can find something, and then we'll read along, and then we will I will share my reactions to it with you. So let's search Karnataka Udupi ban on students wearing hijab. Okay, so I guess हमको थोड़ा बहुत we'll need to travel different into different news sources because like अलग अलग अपडेट्स हैं अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं इस सिचुएशन में बट लेट्स स्टार्ट समवेयर राइट सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस एंड देन विल सी
So, for nearly a month, a government college in Karnataka's Udupi district, and by the way, they're calling it a college, uh, but it's actually a pre-university college, which is basically class 11th and 12th. So, जो कि हम स्कूल ही बोलेंगे, बट यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट कॉल इट कॉलेज बिकॉज हर जगह कॉलेज लिखा हुआ है, एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल बोलना वियर्ड लगता है हर बार. So, for nearly a month, a government college in Karnataka's Udupi district. And by the way, did you know Udupi is a um actual place? This is especially funny for people who have migrated to Bangalore from North India for IT jobs and stuff. Because हमें यहाँ पर इतने सारे उडुपी रेस्टोरेंट्स देखते हैं, and we just think Udupi is a style of restaurant. Yeah, it's like, you know, एक फैमिली का नाम है, जैसे नॉर्थ में अग्रवाल लोगों की इतनी सारी दुकानें होती हैं. बट उडुपी इज़ एक्चुअली लाइक अ particular place in Karnataka. And also, like, this is from what I've heard. This I've not read it, but I knew someone who's like told me that वहाँ पर ब्राह्मण लोगों का like demographically majority है. So they have developed this very nice vegetarian cuisine, क्योंकि सब वहाँ vegetarian खाने के लिए you know try करते हैं. So they have come up with very very tasty um, uh, vegetarian dishes, the least of which is something called as Neeru dosa, which is like, in translated, it will be a water dosa. Like, it is so, apparently it's so light, or it's so thin that उसको खाने में ऐसा लगता है जैसे पानी के तरीके से. So, but you know, none of the Udupi restaurants call themselves Udupi restaurants carry the actual Udupi cuisine items. But anyway, little fun fact for all of you. For nearly a month, a government college in Karnataka's Udupi district has banned students from wearing hijab inside the classroom. 7 of the college's Muslim students who demanded that they be allowed to attend classes while wearing a hijab have been denied entry. The principal of the government women's pre-university college, Udupi, has said that the ban was being enforced to maintain uniformity. The college, built in 1985, has around 700 students, including 70 Muslim students, studying in the science, arts, and commerce branches. Initially, there were 12 Muslim students who had demanded that they be allowed to wear the hijab during the class hours, but the number has since reduced to 7. Those still resisting the ban say the others gave in to the college's threat of not issuing hall tickets for final exams. According to college authorities, students are allowed to wear hijab until classes start. Classes are held between 9:30 a.m. and 4 p.m. So yeah, this is like, यहाँ पे हमारी सारी story start हुई. This article is from 21st January. So this college, Government Women's Pre-University College Udupi, decide like the principal of this institute decided that you know, wearing a hijab during class hours in a class in school by the students is not allowed, because students की यूनिफॉर्म होती है, एंड यूनिफॉर्म, यू नो, ड्रेस कोड होता है. ड्रेस कोड में सबके क्या पहन सकते हैं, क्या नहीं पहन सकते, इट्स ऑल laid out. And you know, wearing an extra scarf, because again, hijab is not like इंडिया में हमें क्या लगता है कि ओके, यू नो, मुस्लिम औरतों को पूरा बुरखा पहनना पड़ता है हर समय एंड ऑल दैट. इट्स नॉट फॉर यंगर women, it's not like that. For younger, like, girls, it's not like that. They can just wear like something which is basically a scarf, which goes around your head, covers your neck and your shoulders and your hair as well, like, primarily. And so, okay, at the face of it, like, अगर story यहीं तक रहती, right, nobody would have cared about
I'm not sure if anybody would have cared about this that much if situations had not developed. Because अब क्या हुआ कि इस कॉलेज को, like when this thing came out, other colleges started doing this. So uh, according to them, this was not an issue earlier. According to them, यहाँ पहले तक ये कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से हो रही है. Which again, like, okay, even if अगर पहले प्रॉब्लम नहीं थी, like they're like, okay, uh, so it has been followed for past 37 years, but now these issues are polluting the college. Like, this is so fucking weird for me, right? Whenever it's something which you don't like, because as if any environment is free of politics. All environment has like politics around it. सब जगह है politics. एक तो ये वाला हमारा जो मेंटल इमेज है ना कि कुछ जगहों में पॉलिटिक्स नहीं चलता, एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं चलता. पॉलिटिक्स हर जगह चलता है. ठीक है, हमको जो चीज़ें नॉर्मल लगती है ना, हमको नहीं पता लगता, बट कुछ लोगों के लिए दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटिक्स. ठीक है, कि अगर तुम्हारे लिए तो नॉर्मल है कि ठीक है, किसी को भाई यूनिफॉर्म सबको एग्जैक्टली सेम पहननी है, बट फॉर दीज लाइक गर्ल्स, फॉर girls who are, you know, following the following Islam, उनके लिए this is now a political issue. Like, why not, you know? So again, this is also चीज़ें और कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाती हैं बिकॉज दिस इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी कोई भी ड्रेस कोड लगा सकते हैं एंड लाइक नो बडी वुड केयर अबाउट दैट. बट यहाँ पर इट्स ऑलमोस्ट लाइक गवर्नमेंट एक स्टैंड ले रही है कि नहीं, तुम्हारे लिए हिजाब पहनना ओके नहीं है, राइट? सो Masood Manna of the Students Group Campus Front of India said, "We have met the UDP DC in this regard, but it is only the college principal who is against it. The entry of girls wearing hijab, that is. He holds a meeting once in a while, which is an eye wash. But what stops them from allowing girls to enter with hijab? It is left to their choice." This is not the first incident in Karnataka in recent years. Similar incidents have been reported in Udupi, Dakshin Kannada, and Chikmagaluru districts. In 2018, Hindu students in a government first grade college of Balgadi village in Chikmagaluru district wore saffron scarves. Oh, so ऐसा हो चुका है. It's like a the past is acting like a spoiler for the future, I guess. Uh, District wore saffron scarves, demanding that the college ban the entry of students wearing burqa and hijab inside the classroom. The principal, who held a meeting with parents, was able to convince them that hijab would be allowed but not burqa. Again, in late December last year, the issue cropped up, but with the help of the local MLA and officials, it was resolved. As I was saying, ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स हैं होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता. एंड आई डाउट दिस वन ऑल्सो वुड हैव लाइक कम अप, कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी में आता, unless this became a movement now. And it became a movement because the board of education of Karnataka state, उन लोगों ने डिसाइड किया to comment on this, right? So again, as I was saying, an officer in the state's Department of Pre-University Education said the department would now be coming out with a uniform policy for students. It is disturbing the environment of the colleges. We will soon release the uniform policy, right? So this is like where this thing started. इतने के बारे में मेरा क्या रिएक्शन है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, राइट? it's a non issue. It could be because it's not like बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है इससे ऑन आइदर साइड, राइट? बिकॉज किसी के लाइक आई डोंट केयर टू लाइक
uh, uphold some यूनिफॉर्म दैट मच. मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म ही बहुत का भी बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है. लाइक यूनिफॉर्म को इस तरीके से फॉलो करने का. लाइक ड्रेस कोड होता है, तुम एक जनरल यू नो कैटेगरी बता कर सकते हो कपड़ों की. बट टू बी लाइक नहीं, ओके, इतने से कम भी नहीं और इतने से ज़्यादा भी नहीं. दैट्स वियर्ड बिकॉज मैं भी स्कूल जा चुका हूँ. नो बडी फॉलोड द यूनिफॉर्म लाइक टू द टी. सब लोग अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर लेते थे. इट नॉट यूज टू बी दैट मच ऑफ एन इशू. अगर it is almost unimaginable to me. I'm telling you because I've studied in like an Air Force school which is more or less like a private school. It operates like a private school. But uh, अगर मेरे स्कूल में किसी दिन कोई एक्स्ट्रा क्लोथिंग आइटम पहन के आ जाता है, राइट, आई डोंट थिंक पीपल वुड हैव लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई एक्स्ट्रा दूसरे प्रॉपर कपड़े, बट कोई एक्सेसरीज, राइट, स्कार्फ एंड ऑल दिस कम अंडर एक्सेसरीज. अगर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लाइक जो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड में नहीं है वो पहन के आ जाता है, आई एम प्रेटी श्योर इतना बवाल नहीं होता उस चीज़ के ऊपर. इट कुड हैव बीन लाइक वेरी सिंपल, वाज लाइक हो गया यू नो ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट समथिंग आउटरेजियस, एज लॉन्ग एज कुछ बहुत ही बकवास चीज़ नहीं है, इट्स फाइन यू नो. सो बट या नाउ दिस इज बिकमिंग लाइक अ थिंग लाइक ओ तुम तो अब कॉलेज में पॉलिटिक्स कर रहे हो, व्हेन इन रियलिटी like statements and like orders like this are what is like sort of like doing jabardasti of politics, right? So this is like the starting point. Now let's look at how this situation grew. This is update for from 2 days ago. Which is again Udupi district, right? The row over hijab in Karnataka has escalated further after another government college in Udupi banned hijab wearing female students from entering classes. The incidents had been reported from Kundapura area in Udupi district of Karnataka on Thursday after students wearing saffron scarves raised objections to Muslim girl students wearing hijabs in the classrooms. By the way, let's talk about the saffron scarf, right? At the face of it, like, I am not a hypocrite in this. I don't think wearing like a saffron scarf is that big of a deal in itself, right? I don't like, again, I am not, like, as I said, a hypocrite in this, that okay, hijab है तो ठीक है, but saffron scarf नहीं, ये नहीं होना चाहिए. Like, it is such a small thing. मैं basically ये कहना चाह रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा स्कार्फ एक इतनी छोटी और इतनी मीनिंगलेस चीज़ है. इट्स जस्ट वन एक्स्ट्रा आइटम ऑफ क्लोथिंग, ठीक है. सर्दियों में नहीं होता क्या? सर्दियों में लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेयर्स चढ़ा के आते हैं और भी कपड़ों की, ठीक है, और एक्स्ट्रा मफलर पहनते हैं और एक्स्ट्रा ग्लव्स पहनते हैं. हर चीज़ यूनिफॉर्म का पार्ट होता है क्या? या नहीं, यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है तो नहीं, तुम ग्लव्स नहीं पहन सकते, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म, राइट? सो द सेम लॉजिक, ठीक है, स्कार्फ एक एक्स्ट्रा पहन रहे हैं, दैट्स फाइन. बट व्हाट इज़ नॉट फाइन एंड व्हाट लाइक एंडेड अप दिस हैपनिंग इज़ उनका स्कार्फ पहनना एक नॉर्मल चीज़ नहीं थी. इट्स नॉट लाइक अ साइलेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग. इनफैक्ट ये तो एक, इट कुड हैव बिकम अ सिंबल ऑफ सॉलिडारिटी कि हाँ ठीक है, तुम भी पहनो अपना धर्म का सिंबल, लाइक वट एवर इज़ असेंशियल फॉर योर ड्रेस, रिलीजियस ड्रेस कोड, हम भी पहनेंगे, ठीक है. इट्स लाइक फाइन, सबको राइट मिलना चाहिए इस चीज़ का. बट दिस वॉज लाइक दे डिड इट लाइक एज ए vocal overt protest, right? And
So there's this video of hijab wearing Muslim girl students have gone viral on Thursday, where students could be seen pleading to the principal to allow them into classroom ahead of their exams. The girl students have also appealed to keep bigotry out of campus. The controversy over hijab comes as another girl students of a government प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जिसके बारे में लाइक हमने अभी भी पढ़ा था राइट. मेरा कैमरा क्यों ऐसा कर रहा है. आई हेट माई लाइफ समटाइम्स. Yeah, okay, yeah, this is interesting. Meanwhile, the principal claims he was only implementing local BJP MLA Haldi Srinivas Shetty directives that said the college should stick to uniform. Which is, by the way, not a directive. उसने एक statement बोली थी, which is pretty bad in itself. We will go over that. So, hold on. Sorry, sorry. So anyway, yeah, this thing, right? And also, I don't think it was this guy. I think it was some other guy. Let me find that news item. Oh yeah, the CM. The CM. Where is that student? That there was something pretty weird. Okay, I'm going to switch to my face while I find that exact article. Oh yeah, I found it. This is not the CM because like बहुत सारे लोग हैं. There's the MLA who said something. Then there's uh, this Karnataka Minister of Home Affairs, Argajanendra, who's like this. If students start behaving like religion is more important, then what sort of future are we building? There must be a universal feeling in our schools and colleges that we are all Indians. This I take issue with. This is a pretty weird thing to say. Like just because just because you're not you're wearing one extra thing in a government college, how does that instill a feeling of not being Indians? Like, none of this makes sense at all. And, like, all these statements, right? Because legally, I found out there's this um, um, article uh, ensuring the right to freely propagate, profess, and practice your religion, right? As long as it's not causing any sort of, it's not like on morally
wrong or causing some sort of civil unrest or causing any sort of harm to the followers' health. It's fine in all these cases, and I think the hijab wali cheez passes all these evaluations. ठीक है? And like the thing is यार मैं बताऊँ, I am an anti-religious person, and मेरे हिसाब से कोई भी रिलीजन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. मेरे हिसाब से ज़्यादातर ऑर्गेनाइज रिलीजन्स को डिसॉल्व कर देना चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ के लिए लाइक यू टू इवन कंसिडर दैट इन पब्लिक इन जनरल, लोगों को सारे धर्मों को बराबर लाइक इवेलुएट करके समझना पड़ेगा, राइट. बट यहाँ पर अभी इतना सारा एंड देयर इज सो मच लाइक दुश्मनी, ठीक है, एंड मार्जिनलाइजेशन दैट इज़ देयर on along religious lines, that I find myself end up supporting like Islam basically. It's because I can't bring myself to be like what अच्छा है कि वो लोग अपना धर्म फॉलो नहीं करवा रहे, बिकॉज इट्स डिसप्रपोर्शनेट एंड इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है. इससे सिर्फ दुश्मनी बढ़ रही है. इससे ऐसा नहीं है कि वो अपना धर्म छोड़ रहे हैं. उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि उनको अपना रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, एंड लाइक दैट्स रॉन्ग, दैट्स बैड, राइट. इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू अ गुड थिंग, इट्स नॉट गोइंग टू लीड टू अ गुड आउटकम. एंड टाइम एंड अगेन इट्स द सेम थिंग कि अभी यूनिफॉर्म ड्रेस कोड आएगा, ठीक है. इट्स Let's see how that turns out. Yes, I'm using ad blocker, and no, I'm not turning it off. Let's watch some video footage. I think I need to turn the Chrome volume on. Yeah. Rao has resurfaced. This time, Muslim students wearing hijab at the Kandapura Government College in Karnataka were not being allowed to enter the classrooms. This move really comes after saffron-clad Hindu students raised an objection to these students wearing hijab inside the government college. My colleague Deepak Bopanna now joins me live on the broadcast. Deepak, this is another big thing, right? When they're like कि नहीं, okay, colleges में politics मत लाओ या colleges में religion मत लाओ. What is this? क्योंकि ये चीज़ उस सेम कॉलेज की भी नहीं है. जिस कॉलेज से स्टार्ट हुआ था वो अलग कॉलेज था, ठीक है. ये दूसरे कॉलेज के जो कुंदपुरा वाला जो कॉलेज है, इसके प्रिंसिपल ने अपने आप ही बोल दिया कि नहीं यार ठीक है, बीजेपी का ऑर्डर है कि नहीं ड्रेस कोड फॉलो होना चाहिए, स्पेशली एट द एक्सपेंस लाइक. एंड सबसे बड़ा एग्जांपल विच अगेन आई डोंट थिंक साउथ इंडिया में ज़्यादा चल पाएगा, बट for people who have come from North India, lived in North India rather, you realize, right, that schools allow a turban, like a headgear for Sikh students, right? That's not a standard part of the uniform, but it is allowed for them. हद से हद क्या करते हैं कि the color is something that matches the rest of the uniform. Again, मेरे Air Force स्कूल में सेम चीज़ थी कि ओके तुम टर्बन पहन के आ सकते हो, पगड़ी पहन के आ सकते हो. पगड़ी का कलर लाइट ब्लू होना चाहिए, स्काई ब्लू बेसिकली, राइट. एंड वर्कड आउट फाइन. आई हैव अ डाउट कि इस सिचुएशन में समथिंग लाइक दिस कैन नॉट वर्क आउट. तुम्हारी जो भी ड्रेस कोड का लाइक यूनिफॉर्म का कलर है, जस्ट उस कलर का हिजाब पहन के आ जाएंगे लड़कियाँ. हिजाब बहुत बड़ी डरावनी वो चीज़ नहीं है, जस्ट अ स्कार्फ रियली. सो Karnataka continues to be the hotbed for this religious extremism, these confrontations that are being reported from educational institutions, sadly, by the day.
Absolutely, it's quite a regretful scenario in Karnataka at this point in time because these communal issues are surfacing in educational institutions, and somewhere the government is not able to put an end to it. We've seen, the standoff that has taken place for days now together, for nearly a month, in fact, at the Udupi College. And students there not being allowed to enter the campus, even a petition is in court. And now a very similar incident is playing out at the Kundapura College. Here, yesterday, of course, there were protests that were held by students. Again, where is the footage of the protest? Hold on. I think they don't have the footage of the protest. ತಕ್ಕಂದ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಂದ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು Why are these people giving more importance to ತಗೊಳ್ತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಹೌದು ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ Hold on. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಗೆರೆಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಮಕ್ಳು ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ. Anyway, that's the gist of it. At the end of the day, Karnataka High Court is looking into this. But yeah, this is absolute garbage. Like, I really don't think कि ड्रेस कोड पहली बात तो इतनी पवित्र चीज़ है उसको हाथ नहीं लगा सकते एंड इट्स नॉट एनी सॉर्ट ऑफ आइटम जो कि किसी कहीं पे भी कोई किसी की हेल्थ को किसी की मॉरली कुछ गलत कर रहा हो या किसी का कुछ सिविल अनरेस्ट ला रहा हो ज़बरदस्ती का इशू है लाइक and it does this does make me so suspicious and this does like मैं like cringe करता था जब लोग बोलते थे कि नहीं पूरी गवर्नमेंट इस्लामोफोबिक है but this very clearly is an example because I'm pretty sure ये लोग सिख मेल स्टूडेंट्स को इतनी आसानी से बैन नहीं कर पाएंगे it's like yeah okay yeah this was also done and time for another break.
Okay, you're back. You know, guys, if anybody at all is watching right now, and if literally no one is watching, I guess I'll just cut this into a clip as well, and I'll post it as well. Like, I put a lot of effort into like preparing the content for these streams, and मतलब मेरे पास भी जॉब है, मुझे भी खाली वीकेंड ही मिलते हैं like to sort of do like proper research, proper scripting, proper notes बनाने, you know, and everything. 1.5 दिन मिलता है practically because I start streaming at 4 PM on Sunday. And बात ये एक्चुअली इवन मेरे दिमाग में भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो मैं बोल सकता था और मैंने नहीं बोले, बट मेन चीज़ है कि मैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो लोगों को इम्पैक्ट करें, जिनका लोगों में इंटरेस्ट है, जिनसे लोगों मतलब जिसके बारे में लोगों को शायद इतना नहीं पता बट उनके ओपिनियंस हैं काफ़ी सारे, एंड मे बी मुझे कुछ चीज़ें पता लगेंगी उनसे, यू नो, लाइक टू वे कम्युनिकेशन, राइट? कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर एक पॉइंट पहले से लिखना हो. मैं इफ़ यू टॉक टू मी, इफ़ यू सेंड योर कमेंट्स, इफ़ यू सेंड योर चैट्स, उनसे बात करते करते वी कैन बिल्ड पॉइंट्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, राइट? फॉर एग्जांपल, लाइक आई मेड दिस पोस्ट ऑन रेडिट अबाउट द सिमिलर इशू जो हमने सेकेंड स्ट्रीम में टैकल करने की कोशिश करी थी, द मेंस राइट्स एक्टिविज्म थिंग, राइट? मैरिज स्ट्राइक एंड ऑल दैट. एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई किया, उनको आंसर करने में मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी और मुझे भी मैंने भी लाइक एक प्रॉपर नैरेटिव क्रिएट कर पाया, मैं भी अपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अच्छी दे पाया, बिकॉज आई वॉज गेटिंग सम फीडबैक कि लोगों को क्या लग रहा है मेरी बात सुन के, एंड मैं उनको बता पा रहा हूँ कि नहीं, ओके मेरा मतलब ये है, या ओके तुम सही समझो, और हाँ मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, इस चीज़ में इम्प्रूव कर सकता हूँ, या नहीं मैं इस चीज़ से मूव नहीं कर रहा, राइट? सो उससे क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स. मेरे को अकेले बोलने से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये लगता है दैट somebody is interacting with me, talking with me, and then I respond to them, and in responding to them I am able to build like a point. तो रॉ नॉलेज चाहे मेरे पास कितनी भी से, बट व्हेन आई टॉक टू समबडी, उसको एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसको एक समझ में आने के लायक फॉर्मेट में, और थोड़ा इंटरेस्ट बने जिस चीज़ में, उस फॉर्मेट में मैं बोल पाता हूँ, राइट? तो लाइक if at all anybody is watching, or if you're watching this as a clip on YouTube later, like this is actually like a request coming from my heart, that if you know me personally as a friend, and if you like me, I try not to like, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर की तरह लेक्चर देता रहूँ यार, ठीक है? एंड व्हेन नोबडी इज़ लिसनिंग, टीचर्स को एटलीस्ट उनकी क्लास तो सुन रही होती है. Camera keeps dying. Thank you. Please just like try to join in, try to participate. And if I get concurrent viewers, the stream will like get ranked higher. तो और लोगों को भी विजिबल होगी, और लोग भी देखेंगे, एंड उसके थ्रू मुझे थोड़ी और विजिबिलिटी मिलेगी. विजिबिलिटी इज़ एवरीथिंग इन स्ट्रीमिंग और लाइक एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन. एंड मैं एक अभी बोलूँ एंड देन बाद में आई कट द क्लिप एंड देन मैं उसको पोस्ट करूँ, लाइक आई फील लाइक आई डोंट थोड़ा बेहतर हो सकता है. आई फील लाइक
थोड़ा सपोर्ट और मिल सकता है. So if you know me personally, or if you are you have become interested in my content, I would just request you to tune in, maybe subscribe to me so that you get notifications, or follow me on Twitch. Whenever I'm streaming, you will get a notification. Then you can sort of interact a little bit and try to engage with the points that I'm talking about, and try to stay for longer than 5 minutes. I know this sounds really pathetic right now, but yeah, it is quite difficult, because when I started the stream, my energy level was like here, and right now it's like either, and it's about to go out of the frame. So yeah, you know. I wanted to talk about this movie मैंने अभी अभी देखी थी. It's called Don't Look Up, and I'm pretty sure सब लोगों ने देख चुका है इस समय तक because 2-3 महीने पहले आई थी, Netflix exclusive है, and like everybody was talking about it, and I got so annoyed by everyone talking about कितनी अच्छी है, देखो कितनी मस्त है, and I मैं नहीं देख रहा, right? That's how just I operate. जितना तो मुझे अनॉय करोगे कुछ चीज़ देखने के लिए या पढ़ने के लिए, मैं उतना उसको नहीं पढ़ने वाला. बट मुझे पता चलता है अभी लेटली कि उसको, इस मूवी को डायरेक्ट और राइट किया है एडम मैके ने. एडम मैके कौन है? एडम मैके को मैं जानता हूँ. मूवी एक लाइक इज़ ऑल्सो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, not producer, what am I saying? But yeah, he wrote and directed the movie The Big Short. It came out in like 2015, and The Big Short is like a much more boring Wolf of Wall Street. दोनों movies, you know, banks के frauds के बारे में, like investment banking से related, investment banking में क्या shady चीज़ें चलती हैं उसके बारे में. But with Wolf of Wall Street was from the perspective of the people doing it, जो bankers already ये सब कर रहे थे, and Big Short थोड़ा, you can't say कि वो bankers के perspective से नहीं है, लेकिन जो primary characters हैं वो, you know, they are not part of the fraudulent system. They are not the fraudsters. They are not the people who are sort of doing the wrong thing. They are like, this is from the perspective of the people who were trying to take advantage of the bad things other people were doing. So what do I mean by the bad things? I mean the 2008 financial market crash. And it's like trying to present the untold side of it. Like it is trying to talk from the perspective of people who saw it coming, who saw the financial crash coming and decided to make money from that. And it's a really good movie is what I'm trying to say. मैंने उस मूवी को कई बार देख चुका हूँ, ठीक है. And I can't say that every time I watch it I learned something new. एक लिमिटेड ही है उसमें चीज़, not that heavily layered story, but I watch it again and again because I like so much how it explains everything. So अगर तुमने बिग शॉट देखी है, I think you might have an idea what I'm talking about. But in that movie इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि जो भी देख रहा है उसको हर चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है. इसलिए वो स्टोरी को इस तरीके से स्ट्रक्चर करे हैं, एंड उन्होंने बीच बीच में ऐसी चीज़ें भी डाली हैं जिससे जो कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको फोकस करके समझाया है, ठीक है. सो यू माइट ऑल्सो नो दिस इवन इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट. आई थिंक यू माइट हैव एन आइडिया कि उसमें बीच बीच में सेलिब्रिटी कैमियोज़ हैं, एंड दो सेलिब्रिटी कैमियोज़ कम इन टू वेन एवर देर इज़ सम न्यू टेक्निकल टर्म which is introduced. For example,
they start talking about CDO. What is a CDO? Collateralized debt obligation. ठीक है. Margot Robbie comes in to explain that. Then you have that. Oh, okay. What is a synthetic CDO? Then Selena Gomez and some other professor comes in. Then oh, okay. What is a oh wait. Okay, CDO was explained by Anthony Bourdain. What did Margot Robbie uh, explain? I think she explained, yeah, mortgage-backed securities (MBS). I think she explained that. तो लाइक बेसिकली उसमें ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स यूज हैं एंड वो मूवी बोलती भी है कि भाई ये सारे टेक्निकल टर्म्स ना जानबूझ के इन्होंने थोड़ा जार्गन बना रखा है, ये इतना मुश्किल नहीं है समझना. ठीक है. इसलिए उसमें पूरा एक डायलॉग भी है कि इफ़ दिस साउंड्स कंफ्यूजिंग दैट्स बिकॉज इट्स मेंट टू बी. इट्स मेंट फॉर यू टू फील लाइक दैट ओनली द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैन डू व्हाट दे डू. ठीक है. सो what I like about the movie is not just these segments, but even logically, the story is like not the story. The movie is very dedicated कि तुम उस मूवी को साथ साथ समझते चलो. जो भी हो रहा है हर चीज़ इज़ ए लॉजिकल like extension of what you learned before. It's literally structured like a textbook. जैसे टेक्स्ट बुक में होता है कि ठीक है ड्राई टेक्स्ट देन एक कलर्ड बॉक्स होगा, फन फैक्ट जो भी तुम अभी पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन ऐसे है. लाइक तुमने सुना होगा इस चीज़ के बारे में, तो उससे रिलेट करके तुमने जो अभी तक पढ़ा तुम उसको रिलेट कर सकते हो अपनी रियल लाइफ से, या तुमको थोड़ा उस चीज़ को समझने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा. राइट. So this movie, that movie is also like that. It's like okay, story, then like a segment of like some attractive celebrity talking about some technical concept. ठीक है, ताकि तुम attention pay करो. Right. So I really like that approach, and that is one thing. And the second thing is जो भी technical terms जैसे जैसे आ रहे हैं वो इस ऑर्डर में आ रहे हैं जिस ऑर्डर में तुम उनको समझ सकते हो. ठीक है. तो तुम्हें पहले मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी समझा रहे हैं, उसके बाद CDO समझा रहे हैं, उसके बाद सिंथेटिक CDO समझा रहे हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं लाइक एक के बाद एक जो चीज़ तुमने अभी समझी उसके दे आर बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ द थिंग दैट दे आर एक्सप्लेनिंग. राइट. सो हर चीज़ लाइक इट्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन this fraud that happened right in the stock market, like in the real estate, and then connected to that in the stock market. They're trying to explain to you the fraud that went on. Okay? And they're trying to criticize it. They're trying to present it in a critical way because a lot of the characters are like feeling morally ambiguous. Like at many points बहुत सारे कैरेक्टर्स दे जस्ट से आउटराइट कि नहीं हम जिस चीज़ से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल नेगेटिवली. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसेस. ठीक है. हम ये शर्त लगा रहे हैं कि मिलियंस और मिलियंस ऑफ families are going to lose their homes, right? And we get paid out like a really big amount of money if that happens. So it will be our victory at their loss, right? So it's like they never that sort of moral weight is never lifted. And I really like that movie, and I like rewatching it. Right? It's very style wise and very like structure wise very interesting, very engaging, and I take interest in watching it every time. क्योंकि वो थोड़ा ना मतलब थोड़ा इनसाइड लुक देती है, वो ना थोड़ा इनर फंक्शनिंग क्या है उसके बारे में बताती है. ये ऐसा होता है, दिस इज़ व्हाट गोज डाउन बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस फ्रॉडुलेंट सिस्टम्स. सो now talking about Don't Look Up, right? I feel first of all I feel Netflix ने इसमें काफ़ी इंटरवेंशन किया है, because at the end of the day this is the movie that made me go at the end there is no way Adam McKay is not an anti-capitalist.
Like, I would say, I would want him to be like a full on leftist, like a full on socialist maybe. But at the very least, based on उसने जो movies बनाई हैं and the impression those movies give me, he is like anti-capitalist. And he tried to make like sort of, I think, in my opinion, this sort of the starting idea of this movie was to create a metaphor for like climate change, because climate change is like something that's happening to the entire earth. बहुत सारे लोग अफेक्ट होंगे उस चीज़ से, एंड इट्स लाइक समथिंग दैट यू कैन साइंटिफिकली कैलकुलेट कि कब होने वाली है, कितने टाइम में होने वाली है, कितना इफेक्ट आने वाला है उस पर. एंड यू नो, एंड पीपल आर टेकिंग इट्स दैट सीरियसली, राइट. एंड उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं जा रहा. एंड हमने सॉर्ट ऑफ कॉरपोरेशंस को डेलीगेट कर दिया है कि कॉरपोरेशंस जो है ना, प्राइवेट कंपनीज हैं, कंपनीज लाइक स्पेस एक्स लाइक एंड टेस्ला एंड ऑल दैट, ये हमारी एनर्जी क्राइसिस सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिकॉज दे हैव दिस कैरेक्टर विच इज़ लाइक वेरी क्लियरली लाइक a stand-in for Elon Musk, in my opinion. Hold on, let me just find his picture. Yeah, let me just find some screenshots from this movie. Not videos, photos. Yeah, okay, this guy. This guy is like so obviously a stand-in for Elon Musk. Like, but the funny thing is that he talks like Jordan Peterson, which is fitting because Jordan Peterson is an Elon Musk fan. But yeah, this guy, uh, uh, like is like a CEO of a really big corporation, right? And the thing is, एक तो problem यही है कि that they're trying to project what hasn't happened yet. Like they're trying to, उनकी जो story है, it's like a story into the future, and that is why it's like not that fact driven in my opinion, because इतने facts हैं नहीं. It's not like ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है एंड ऑलरेडी उसको इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं और ऑलरेडी उसको एनालाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, राइट. सो दैट्स द रीज़न वाई आई फील लाइक मे बी दैट्स वाई इट्स नॉट सो लाइक आई वुड से intelligent, but also at the same time it's a comedy, and also at the same time they try to make it sort of topical, and like they tried, I'm pretty sure like they tried the uh, tried to sort of create some parallels between how we are treating COVID-19, right? Because here's the thing, right? So let me substantiate मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? And then let me also talk about कि मैं इस चीज़ में like why I'm a little fine with this, right? So spoiler alert, right? What's happening in this movie? Like this is the setup of the movie. कि okay, there's a comet heading towards the Earth, and वो सीधे Earth से collide करने वाला है. It's like 9 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer wide, and basically however much wide it is, it's basically that comet from Armageddon, कि वो पूरा extinction level event, सब life on earth is going to get destroyed. And the scientists who discover this, like there's the main scientist guy played by Leonardo DiCaprio, some Dr. Mindy, and then there's Jennifer Lawrence who plays his
student who's like his PhD sort of mentee. She's like a PhD candidate who's under his mentorship, and it's their journey through all the news network and talking to the president, like the government, federal government, and social media, and like starting like a full grassroots movement, because at every turn लोग seriously नहीं ले रहे हैं, and then जब लोग seriously ले रहे हैं तो अपने personal benefits के लिए ले रहे हैं, and then you know things keep getting worse and worse. For example, like very early on in the movie, like 40% of the movie जब होने वाली होती है, तब for some reason of the other the US federal government has decided कि ठीक है, हाँ, we'll take this seriously, and हम will launch a bunch of out of commission spaceships towards the comet, and they're all filled with nukes, they're all filled with nuclear bombs, and the nuclear bomb is going to explode the comet. Either it will explode it into like a lot of tiny pieces so that it scatters, or I guess it will change the course, it will like change the direction of the comet. So in any case, the full impact on Earth will not happen, and they create the mission and they launch it also, and वो जा रहा होता है space में, ठीक है, and then this guy comes in, this person, and he's like, you know what, let's not destroy the comet, or let's not subvert the comet, let's mine the comet. इस कॉमेट में बहुत सारे रेयर मिनरल्स हैं, सो हम क्या कर सकते हैं कि उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के बजाय, कभी भी कम्प्लीटली उसको सबवर्ट करने के बजाय, उसको हम 30 छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे, एंड विल लेट दोज पीसेस फॉल, एंड फिर हम उन पीसेस की माइनिंग करेंगे, एंड उसमें से बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड इकॉनमी का फ़ायदा होगा, एंड लोगों को जॉब्स मिलेंगे, दे क्रिएट दिस होल प्रोपागेंडा अराउंड दैट, राइट, एंड लाइक ऑफ कोर्स लाइक फ्रिक्शन होता है विद डॉक्टर मिंडी इज़ लाइक दिस इज़ नॉट दैट गुड ऑफ एन आइडिया, एंड यहाँ पर आई फील लाइक दिस इज़ लाइक एन एलेगरी of climate change more than COVID-19, because COVID, like for climate change and all, also like climate change को काफ़ी पहले डिस्कवर कर लिया था लोगों ने, एंड there were all these things that were being put in place कि ठीक है, हम कार्बन एमिशंस कम करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ओजोन लेयर है, वी नीड टू पैच इट, सो हमको ये सारे केमिकल्स बैन करने हैं एंड ऑल दैट, राइट, सो but then we sort of pulled back from that, right, then we sort of like, when as soon as ये सारी चीज़ें corporate greed, like corporate profit margins से clash करने लगी, then they started lobbying against them, they started lobbying against regulations, they started lobbying against reforms, right, so that's the thing, right, and now since it's a comedy, that's why ये सारा जो टर्न हुआ कि ओके मिशन जा रहा है, सब ठीक होने वाला है, बट देन दे कॉल्ड इट बैक, वाज जस्ट दिस गाय शोइंग अप, एंड बीच में प्रेसिडेंट को पर्सनली बुला के, बिकॉज अपेरेंटली ही इज़ लाइक अ वेरी बिग डोनर, तो इसको डायरेक्टली एंट्री मिली हुई है इन द मिशन कंट्रोल रूम, एंड ही इज़ लाइक नहीं, लाइक टर्न इट अराउंड, एंड दैट्स इट. द थिंग इज़, this relationship, right, ये चीज़ it from the beginning is बस है, it's like कि ठीक है, इस बंदे ने president को, by the way, the president is played by Meryl Streep, we finally got our first female president in a movie, so he's like, yeah, I've donated a lot to Meryl Streep, that is why Meryl Streep has to listen to me, जो कि it's not as simplistic एज दैट, बहुत सारी चीज़ें इसमें लाइक ढंग से एक्सप्लोर कर ही सकते थे, विच इज़ लाइक हाउ दिस कॉर्पोरेट लॉबिंग मैनिपुलेट्स द गवर्नमेंट, एंड लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक he could have used
the leverage of like the incoming, the urgency of the incoming comet to be like, नहीं, okay, I am going to build a solution to this. मेरी शर्त ये है कि there should be no regulations. ठीक है, I will, there should not be any minimum wage requirements for my workers. There should not be any, you know, work hours requirement for my workers. तुम ये सब मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए ना पूरी मशीन बिल्ड कर दूंगा to get rid of this comet, for example, right? और things like that, right? And बहुत सारी चीज़ें like that could have also been made into fun, but then also कि ठीक है, at the end of the day what happens is create these robots that are supposed to attach to the asteroid and then break it apart from the inside. So they will drill inside the surface and they'll drop a bomb there, and so it will be like a fragmented explosion. ठीक है, so ये जो भी साइंटिस्ट प्रपोज कर रहे हैं, like this is where I feel like this came into like COVID-19 का ज़बरदस्ती वाली territory, because they were like, oh no, is this research peer reviewed, you know? And it's like, okay, I think you're trying to be topical but you're missing the point here. Even if जो corporate के scientists हैं, the scientists that are employed by this guy, जिसका नाम मुझे याद नहीं, but I know his company was called Bash. So जो Bash के जो scientists हैं, even if they made a perfectly peer reviewed proper plan for this thing, for this mechanism, ultimately the reason we should not rely on corporations to build solutions to like worldwide problems, is because they are not driven by like उनका जो मोटिव है वो मैक्सिमम इंसानियत की भलाई नहीं है. उनका जो मोटिव है वो मैक्सिमम प्रॉफिट है. ठीक है, और प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब तुम खर्चा कम करते हो और चीज़ को महंगा बेचते हो. ठीक है, खर्चा कहाँ कम होता है? एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में, अच्छे इक्विपमेंट्स में, ठीक है, प्रॉपर थरो टेस्टिंग में. ठीक है, इन सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग, इन चीज़ में कॉर्नर कटिंग. ठीक है, बिकॉज एट द एंड व्हाट हैपन्स इज लाइक द मशीन्स दैट ही बिल्ड दे फेल, राइट? एंड सॉरी, आई एम स्पॉइलर पहले बोल दिया था मैंने. एंड द कॉमेट हिट्स द अर्थ, एवरीबॉडी डाइज. ठीक है, एंड दैट पार्ट इज एक्चुअली लाइक फाउंड वेरी गुड टू वॉच ऑल्सो. काफ़ी अच्छा सीक्वेंस था वो. बट एनी वे, what I'm talking about is that at the expense of being like a comedy, it loses its intelligence. So it gives sort of this this corporate message कि, you know, this is like a problem with corporate America. But exactly कैसे है वो? In the Big Short he explained, like the movie explained properly कि कैसे क्या पेचीदगियाँ हैं, क्या फंक्शंस हैं जो अंदर चल रहे हैं. ठीक है, बट इन दिस इट्स लाइक जस्ट अ कॉमेडी. उसने बोल दिया, उसने कर दिया, एंड देयर इज़ नो लाइक लॉजिकल बिल्डअप ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो यू नो मुझे एक याद आ रहा है, देयर इज़ दिस राइटर फॉर एन एनिमेटेड शो. आई डोंट रिमेंबर विच एग्जैक्टली. आई थिंक इट माइट बी द गाय हु राइट्स फॉर like the main guy who created Rick and Morty, right? So उसने बोला था कि एक जब भी तुम कोई स्क्रिप्ट लिखते हो तो उस स्क्रिप्ट में the worst phrase that you can use in a script is and then. ठीक है, अगर तुम दो इवेंट्स के डिस्क्रिप्शंस को and then से जोड़ रहे हो, then you are not a good screenwriter. Two sequences should be connected not by and then, they should be connected by that's why. ठीक है, this happened and that's why that happened and that's why that happened. ठीक है, and in my opinion the Big Short follows this perfectly. The Big Short does this properly. They're like, okay, फर्स्ट ये चीज़ थी, पहले ये कॉन्सेप्ट था, फिर लोगों ने ये करना शुरू किया, फिर लोगों ने ये करना शुरू किया, फिर लोगों ने ये करना शुरू किया, एंड सो ऑन, राइट? एंड इस मूवी में इट्स लाइक ओके ऐसा हुआ, एंड देन दे हैड लाइक यू नो दे डिस्कवर्ड एन एस्ट्रॉयड, and then they and then when they talk to
the like for example, I was talking about कि they when they initially talked to the White House people, तो वो पहले अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते. They are like they don't take it that seriously. Don't know why. ठीक है. They are like they are not, first of all, not believing it either, or like it's like something that they don't want to put in it. Like उनके mid terms आने वाले हैं, so they don't want to create a controversy. ठीक है. And then some controversy happens with the president. ठीक है. Because of which now her attention turns. This like, and that controversy that happens, right? There is no precedence for that. That's like, I don't even, like, I guess it's like something that's similar to what happened to Bill Clinton and, like, the whole Monica Lewinsky scandal. Okay, so I guess there is a like a parallel to that. Okay, but at the same time, this the president has her son as like the chief of staff, played by Jonah Hill, and that is like the least useful character in the entire movie. वो सिर्फ jokes का के लिए है. ठीक है. He's just there to act lame, and then other people call him out for acting lame, and uh, then he insults them back, and that's it. That's his entire role, his entire job, like in the movie. He might as well not have been in the movie, but then he starts saying things like, oh, my mom is like a my smoking something, what do you call, smoke show, if she was my mom, it's like this is clearly they're trying to allude to Trump, and things like these are like which make me cringe a little. So I think उसमें थोड़ा they have missed out of a genuine exploration just to make things more funny and less, requiring less brain, basically. But on the same time, let me talk about Neil deGrasse Tyson for a moment. ठीक है. नील डिग्रास टाइसन ऑल्दो काफ़ी स्मार्ट बंदा है, उसके पास PhDs भी हैं, उसके पास उसने रिसर्च भी करी हुई है. राइट नाउ हिज प्राइमरी जॉब, हिज प्राइमरी क्लेम टू फेम इज़ नॉट अ साइंटिस्ट, ही इज़ ए साइंस प्रमोटर. ठीक है. what he does is he reduces very complicated science जैसे astrophysics mainly. I mainly heard him talk about like astrophysics and maybe some level of quantum physics, but mostly it has been about planets, galaxies, stars and all that. So what he does is जो ये बहुत सारे complicated concepts हैं, technicalities हैं, he boils them down into things that even children can understand. ठीक है. What happens? अगर मैं चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं यार, वो बंदा ना साइंस को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. बहुत सारे लोगों ने चीज़ लाइक अपन जब टीवी देखते थे, लाइक एटलीस्ट मेरी एज ग्रुप में जब हम लोग टीवी देखते थे, ही डिड एन एपिसोड ऑन ब्लैक होल्स, एंड उस एपिसोड में ही टॉक्ड अबाउट हाउ टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल थ्रू ब्लैक होल्स. ही वाज लाइक कि अगर हम एक तरीका निकाल लें एक ब्लैक होल को ऑर्बिट करने का, ठीक है, टू रीच क्लोज इनफ टू अ ब्लैक होल एंड हम उसमें कंटिन्यूस ऑर्बिट कर पाएँ, तो हम बेसिकली वी कैन ट्रैवल इन द पास्ट. ठीक है. बिकॉज टाइम मूव स्लोअर अराउंड अ ब्लैक होल. सो इफ़ वी ऑर्बिट whatever time we orbit, let's say 1 year we orbit around a black hole, a much longer amount of time would have passed on Earth. ठीक है. तो जब हम वापस आएंगे स्पेसशिप में से अर्थ पे, तो हमारे लिए एक ही साल निकला होगा, लेकिन अर्थ पे बहुत साल निकल चुके होंगे. ठीक है. तो हाँ, बेसिकली तो स्पेसशिप पीपल हैव ट्रेवल्ड इन टू द फ्यूचर, एंड हम लोगों के लिए we are getting visitors from the past, comparatively. So he introduced this idea, and the thing is that it's very very complicated. ठीक है.
ब्लैक होल्स को ऑब्ज़र्व करना ही इतना बड़ा चैलेंज है कि उनको ऑर्बिट करना उनके अराउंड तो मतलब दूर की बात है, ठीक है। और उनको ऑर्बिट लाइक इवन इफ यू आर एबल टू प्रॉपरली लोकलाइज उनकी लोकेशन एंड वी आर प्रॉपरली एबल टू कैलकुलेट एन ऑर्बिट अराउंड इट, ठीक है। बहुत सारी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस, आई डोंट इवन वांट टू गो इनटू दैट, ठीक है, जो कि ही इज़ ग्लॉसिंग ओवर, ही वो उनसे बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, ठीक है। एट द एंड ही इज जस्ट सेइंग टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल अगर हम एक ब्लैक होल को ऑर्बिट करना फिगर आउट कर लेते हैं, ठीक है। द थिंग इज़ इससे लोगों में, बच्चों में एटलीस्ट इंटरेस्ट तो आएगा कि वो थोड़ा एस्ट्रोफिज़िक्स के बारे में पढ़ें, थोड़ा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ें, थोड़ा एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में सोचें, थोड़ा स्पेस साइंटिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचें, है ना। इट उनका इंटरेस्ट स्टार्ट करता है वो, ठीक है। सो ये उसका जॉब है, ही इज़ अ साइंस प्रमोटर, ठीक है। सेम थिंग एडम मैके के साथ भी लगती है मुझे। आई थिंक एट हार्ट ही इज़ एन एंटी कैपिटलिस्ट एंड उसके पास ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑल्सो एंड ही इज़ स्मार्ट इनफ इन माई ओपिनियन दैट ही इज़ एबल टू अप्लाई दिस नॉलेज इन टू करेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। ये पुरानी बात नहीं करता, वो पुरानी थ्योरी नहीं लेके बैठ रहा मार्क्स और एंगल्स की, वो अभी जो चीज़ें हो रही हैं उन पे अप्लाई करता है एक एंटी कैपिटलिस्ट लेंस, है ना। सो आई थिंक इन दैट सेंस मेरे हिसाब से सबको ये मूवी देखनी चाहिए, डोंट लुक अप, ठीक है। ताकि भले ही तुमको हर एक टेक्निकल डिटेल समझ में नहीं आए, एटलीस्ट तुम्हारा माइंड, तुम्हारी आइडियोलॉजी थोड़ा चेंज होगी, ठीक है। तुम्हें थोड़ा दिखेगा कि हाँ ओके, मे बी कॉरपोरेट्स को सब चीज़ों की जिम्मेदारी देना है, कॉरपोरेट्स पे ट्रस्ट करना, जहाँ पर बहुत क्रिटिकल वर्ल्ड लेवल इवेंट्स, वर्ल्ड लेवल प्रॉब्लम्स हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स मे बी नॉट अ गुड थिंग एंड मे बी यू कैन लर्न मोर अबाउट इट, मे बी यू कैन टॉक टू मोर पीपल जिनका सेम ओपिनियन है एंड तुम थोड़ा उनके साथ फिगर आउट कर सकते हैं। दैट वे इट हेल्प्स यू turn your mind. So in a way it's leftist propaganda and you know what, that's a good thing. So yeah, 6:30 हो गए already. We have been talking for 2.5 hours now, more than 2.5 hours. I feel like at least for me, मेरे लिए आज की स्ट्रीम फन थी. I did not bother so much कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, but yeah, thanks for watching and see you next time. अगली बार पक्का, you know, I'll just play a video game. Whatever happens next week, I'm just going to play a video game and खेलते खेलते if I can talk about it, I'll do that. But yeah, bye.